Hello everyone. What's up, Faisal? How are you? We'll start in about 5-4 minutes. Just give me a little bit time and then we'll get started, okay? तो again कल का aftermath देखेंगे कल क्या हुआ था and उसके बाद we'll do our top down analysis and then we will do trading just as we do every day, okay? So just give me a little bit time and then we'll get started.
Hello. Just we are going to get started in about 5, 4, 3, 2, 1. Okay, just give me like 1 more minute. Actually मुझे ये नहीं समझ रहा कि मैंने अपने glasses कहाँ रख दिए. I was just using them and all of a sudden they are just, I'm not sure. So I got my backup glasses right here and let's get started in about. So let's get started. 1, 2, 3, let's go. Hello everyone. How's everyone doing today? Hello Chickpea, hello Fazil, how are you? I hope you're doing well today. We'll get started in about, let me just load the chat, उसके बाद शुरू करते हैं, okay? Hello. Hello everyone. Okay, so everything seems to good. Okay, so everyone, just get started. हेलो आकाश, हाउ आर यू? कैसा था तुम्हारा कल का दिन, या कोई ट्रेड मिली yesterday? You traded anything or something? वैसे बिटकॉइन इज ट्रेंडिंग टुडे, तो लेट्स जस्ट सी क्या हो रहा है. Okay, seems like we are almost at all-time high. Let's look at daily and we are currently like 10,000 away from all-time high. इसमें क्या हुआ था basically ETF की न्यूज़ थी and that's why we had this moves like right here. I think for long term 108.84 is a good target for Bitcoin. If you see, hey, what's up Faisal, what's up Akash, कैसा था तुम्हारा कल का दिन? Let me know. So I think if you are looking for target for Bitcoin, I think 107.48 is a good target for Bitcoin for this market cycle. Remember Bitcoin जो है वो 1.5 से 2 साल का cycle follow करता है. तो if you are currently riding the wave, keep riding the wave until we get at least 101,000. Alright, तो there you go. But हम हमारे फोकस में वापस आते हैं. We are going to trading Euro USD today. Okay, so let's get started everyone. First of all, news देख लेते हैं. Is there any news today?
Yeah, I saw your trade on our group, Faisal. That was a really nice trade. Daily flip. That was a really good trade. तो आज है थर्सडे 29th of February and we are looking at अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स टुडे एट 7, तो उससे हम मार्क कर लेंगे हमारे ट्रेड राइट अप में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एट 1900s। और राइट, तो मतलब आज हमारी न्यूज़ है शाम के समय, तो लेट्स जस्ट सी हाउ दिस गोइंग टू प्ले आउट। बिटकॉइन से यू शुड हैव होल्डेड ब्रो, बिटकॉइन इज मूविंग रियली वेल टू बी ऑनेस्ट। तो yeah, let's just see right here what we are looking at today for EURUSD. First of all, let's just look at मैंने सारा एनालिसिस डिलीट कर लिया है। कल हमने ट्रेड मिस की थी। आई शुड हैव टुक दिस ट्रेड बट कहीं ना कहीं आई गॉट इन्फ्लुएंस, आई गॉट scared because market was already falling and I didn't took this trade. But we took a trade on gold yesterday. Gold, we took this trade right here on gold yesterday. लाइक ऑफकोर्स ये एक ऑफ स्ट्रीम ट्रेड थी एंड मैं इसे फुल्ली कैपिटलाइज नहीं कर पाया था। आई क्लोज फॉर अबाउट 0.75% गेन ऑन अर अकाउंट। ऑलराइट, तो आज के लिए तो मार्केट बुलिश ही नज़र आ रहा है गोल्ड में, इफ़ यू सी क्लियरली। तो इसे कुछ देर बाद एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूरोएसडी में वापस आते हैं एंड लेट्स जस्ट सी कि मार्केट में क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइंस है हमारी सेशन की लाइंस, इन्हें मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ टू टुडे, दैट विल बी 11 o'clock राइट है। So let's just get started. Let's start from daily. If you look at the market with the daily perspective, market again seems to be bullish because yesterday we had this rapid buying from 7982 and I think we can easily go till this area right here. But for that we need to be breaking this level right here. Yes, I do wear glasses. Actually मेरे black वाले glasses दिख नहीं रहे where it went to. मुझे like दूर का नज़र नहीं आता, that's why I have to wear glasses and like small text पढ़ने में like of course I can see the screen clearly but after some time my eyes just hurt, that's why I'm using glasses. Alright, so let's just see on daily we mark this level. These are levels today for today, and if you look at 4-hour chart you will see कि market was falling down, then we created this support right here which is a really good support right here. तो मैं इसे mark कर लेता हूँ, this will be my support right here and this will be my resistance right here and we have a fresh support made right here. वैसे देखा जाए तो 4-hour के chart के perspective से market again seems to be bearish. And let's just break it down further. On 1-hour chart you will see we have created this support right here and if that break we have a clean structure to the left hand side till here, this area right here. Okay, so there you go. इसे further break down करेंगे 30 मिनट के चार्ट में तो you will see कि हम यहाँ पर है and मार्केट ने ठीक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया है and we are holding on this support right here. ठीक है, दिस सीम्स लाइक अ मैस बट इसे हम थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे हमें ट्रेड राइट अप में। तो ऑन डेली मार्केट इज़ बुलिश बट बिकॉज यस्टरडेज 2 कैंडल्स आर बेरिश, तो वी कैन सी अ विक फिल इफ़ वी क्रिएट अ रिसेंट लो। एंड अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो अगेन मार्केट वॉज बेयरिश एंड बिकॉज मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो गया था तो वी आर सीइंग दिस पुल बैक राइट हियर। आई मीन दिस कैन गो फॉर बाय एज वेल एंड दिस कैन गो फॉर सेल एज वेल, तो वी नीड लाइक really good confirmation ताकि हम sell ले सके। but otherwise market seems to be bullish on 4-hour as well because daily में market is bullish and 4-hour में this rejection is really good. तो let's just see on 1-hour chart. 1-hour chart में हमने ये वाली range mark की थी, ठीक है, there you go and we created this support right here. on 30-minute chart you will see कि we have created some kind of range right here, this range right here. okay, तो मैं इसे मार्क कर लूँगा, this will be my buy above level and this will be my sell below level. just give me a minute आकाश, मैं टॉप डाउन एनालिसिस ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद I will look into your chart. तो there you go and मैं इसे और further मार्क कर लूँगा, there you go and इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर लूँगा, there you go. okay, and this right here will be our no trade range. alright,
तो आज के लिए ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल रखते हैं. बेसिकली ब्रेक एंड टेस्ट ऑफ दिस एरिया शैल पुश द प्राइस फर्दर डाउन टू दिस लेवल्स राइट हियर, and if we break this level right here we can go to the upside, which is our primary target right here, this target right here. Okay, so this is our simple analysis for today. अगर हम सिर्फ 15 मिनट में देखें तो again we are yet to break this level. Good morning Kansh, how are you? And let's just see, there you go. तो ये हमारा सिंपल टॉप डाउन एनालिसिस है आज के लिए. दिस इज़ आवर एक्टिव रेंज राइट नाउ. आई एम लुकिंग फॉर ब्रेक ऑफ दिस लेवल टू टेक बाइज एंड आई एम लुकिंग फॉर ब्रेक ऑफ दिस लेवल टू टेक सेल्स. ओके, तो दिस इज़ अ सिंपल एनालिसिस फॉर टुडे. अब राइट नाउ अभी की करंट कैंडल में देर इज़ नो ट्रेड, तो इट विल बी वाइज टू जस्ट वेट फॉर लंडन ओपन विच विल वेयर लाइक लंडन विल ओपन एट 1:30 in the afternoon. Alright, so let's just look at the chart which Akash sent us. Okay, though this trade is really good to be honest, because we have created a resistance. के बाद हमने support बनाया, support break हुआ and we have a clean structure to the left hand side, so you can definitely target a fib extension here. So congratulations on this trade if you took this trade. तो या let's just finish our trade write up for today. तो first of all एक न्यूज़ है 7 बजे की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि है लगभग 7 बजे. इसे अब मैं डेली में देखता है. yesterday was bearish and price can test this level, and मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ first of all. ठीक है, तो previous day was bearish and price can possibly fill yesterday's wick. Okay, तो basically अगर तुम डेली में देखोगे तो market was bearish and we created this long wick right here. तो it is totally possible कि market can like test this level, this wick, we can fill this wick. Congratulations on your confidence buddy, just keep risking more if you are winning the trades. Okay, but just be careful on the downside as well. तो there you go. उसके बाद हम 4 घंटे के चार्ट में आते हैं. तो अगेन मार्केट इज़ काइंड ऑफ बेयरिश एंड बुलिश, कहीं लाइक एक मिडवे में कहीं पर है. ऑलराइट buddy, या जस्ट गिव मी अ मिनट, हम गोल्ड भी एनालाइज करते हैं. इसका ट्रेड राइट अप मैं फिनिश कर लूँ उसके बाद. ओके, तो फॉर टुडे यू विल सी कि ऑन 4 आवर चार्ट, ओके, तो ऑन 4 आवर चार्ट मार्केट सीम्स टू बी बेयरिश ही लिखता है. मार्केट सीम्स टू बी बेयरिश बट अ confirmation is required. Alright, and इसे हम further break down करेंगे 30 मिनट के चार्ट में. तो there you go, हम रेंज को मार्क कर लेंगे. We have created a support at 8391, so that's what I'm going to write now, write down right here. We have created a support at 8319. If this breaks and test, I shall take sell positions. ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, ठीक ये वाला सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो आई टेक सेल्स. एंड वी ऑल्सो हैव क्रिएटेड द रेजिस्टेंस एट 8378. तो अब मैं वो लिख लूँगा, वी ऑल्सो हैव created a resistance at
8378. If this breaks and tests, I shall take buys. ठीक है, आज हम बिल्कुल भी इम्पल्स का एंट्री नहीं करने वाले बिकॉज मार्केट के साथ चॉपी है. तो अगर मार्केट जब कभी भी चॉपी होता है तो वी हैव टू लुक फॉर confirmative entries. Okay, तो we won't be taking any impulse entry, we will wait for our confirmation. Okay guys, अब conclude कर लेते हैं जल्दी से. To conclude, I'm looking for break of range to take trades. ठीक है, तो conclusion में what I'm going to write down is looking for break of range to take trades. Simple. Okay, and our setup for today, we are looking for testing SR, हमारा जो setup type है आज के लिए. एंड मैं ट्रिगर देख रहा हूँ अगेन ब्रेक ऑफ प्रीवियस कैंडल लो और ब्रेकिंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. बात करें पोजीशन साइज की तो आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग अबाउट 1%. ठीक है, तो जल्दी अपने रूल्स, सॉरी पहले एक बार गोल्ड देख लेता है. एंड लेट्स जस्ट लुक एट गोल्ड राइट हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट seems to be bullish right now and we have made a support right here and seems like we have a 2 candle pullback right here. And if you look at the resistance point of view, we have this resistance right here. Okay, इसे further break down करेंगे 4 घंटे के चार्ट में and you will see कि market seems to be bullish and if everything goes well we can easily touch this area right here 127. Okay, but इसे मैं mark नहीं करूँगा, I'll just denote it by a line. Alright. ओके, एंड इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में तो विल सी मार्केट इज़ क्रिएटेड अ फ्रेश सपोर्ट राइट हियर एंड अभी हमें कोई रिसेंट रेजिस्टेंस नहीं मिला है. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 आवर के चार्ट में तो आई कैन एडजस्ट दिस लेवल राइट है. एंड इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में तो यू विल सी कि मार्केट जो येस्टरडे का जो रेजिस्टेंस है उसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है. तो ऑल आई एम लुकिंग फॉर इस काइंड ऑफ सेल परस्पेक्टिव राइट हियर एंड इफ दिस फ्रेश रेजिस्टेंस ब्रेक देन आई विल टेक बाइज. So this is the analysis for gold today. There is a euro news now. Let's just check at the news again. Okay, there is a news at 1:15 euro news which is German. वैसे तो ऑल डे वाला प्रीमियर है तो आई डोंट थिंक सो ऑल डे वाली न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती है तो this is not going to be that much problem. And about French consumer spending month on month, ये डाटा उतने इम्पोर्टेंस नहीं है जितना रेड फोल्डर डाटा होता है तो let's just wait and see. ठीक है, तो about gold we have created this range right here. I'll mark that as buy above and this right here will be my no trade range. Okay, and I'll just mark this as my levels right here. ठीक है, अगर तुम ये मेजर करोगे तो दिस रेंज इज प्रिटी बिग. ओके, दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट 30 पिप बिग. तो yeah, I'm basically waiting for a resistance to be formed on this one and if that resistance break I'll take the trade towards buy side. And overall अगर तुम देख रहे हो तो overall जो mid term trend है it totally towards buy side but it can flip really soon. And if you are into scalping position there is no need to worry about the trend of course because अगर तुम बहुत minor move को capture कर रहे हो but if you like to trade with the trend market seems to be bullish at the moment because yesterday अगर तुम notice करोगे तो this was a really good resistance on 4-hour chart and we broke that resistance pretty quickly. So it is totally possible कि market can just straight away go to this area right here which is at 2046 level. ठीक है, so this is our analysis for gold today and this is our analysis for euro USD today. Now we have to do the simplest thing, we have to be just patient and wait for a setup to be formed. Okay, and अगर हमें कोई setup मिलता है then we are going to execute our trade. उसके बाद हमारे रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. अगेन हर ट्रेड में जब हम एंटर करते हैं तो उसमें हम कुछ रिस्क पुट ऑन करते हैं तो मेक श्योर अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी होता है तो तुम अपने रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो.
ओके। एंड उसके बाद हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। मार्केट को कोई भी करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो तो किसी भी ट्रेड में हद से ज़्यादा रिस्क मत करो। वी हैव टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ओके। उसके बाद हमारा जो सेकंड रूल है वो है देयर इज़ नो फिक्स आउटकम टू एनी ट्रेड। मतलब कोई भी एक ट्रेड का फिक्स आउटकम नहीं होता। किसी भी ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना कि उसके लॉस में जाने के चांसेस। हम इन चांसेस को बीट करने की कोशिश करते हैं थ्रू आर प्रोबेबिलिटीज़। ओके, थ्रू आर प्रोबेबिलिटीज़, थ्रू आर एज। एंड अगेन तीसरा रूल हमारा वही है कि ऑलवेज स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ योर एज। हमेशा अपनी एज को फॉलो करो, अपनी रूल बुक को फॉलो करो। तुमने जो अपने लिए प्ले बुक बनाई है उसको डेफिनेटली फॉलो करो एंड अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो। उसके बाद हमारा जो फोर्थ रूल है वो है द मोर यू लूज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर तुम एक लूजिंग स्ट्रीक में हो तो डेफिनेटली यू विल कैच अ विनिंग मूव, एंड अगर तुम एक विनिंग स्ट्रीक में हो तो यू विल डेफिनेटली लूज मनी रियली सून। तो मेक श्योर कि तुम एक एक लाइक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद हमारा फिफ्थ रूल है अगर तुम्हें प्री लंदन सेशन में ट्रेड नहीं मिल रही तो तुम्हें लंदन सेशन में ट्रेड मिलेगी, एंड अगर लंदन सेशन में ट्रेड नहीं मिली तो तुम्हें न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड मिलेगी। बेसिकली दिन भर में एक या दो इस तरह की ट्रेड होती है जो तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारी प्लेबुक में फॉल करना चाहिए अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो तो, स्कैल्पिंग या मूव टू मूव ट्रेड करते हो तो। ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ रूल है ट्रेड इन द नाउ मोमेंट। कल अगर तुमने जितना भी विन किया है या जितना भी लॉस किया है उसका आज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। हर मोमेंट मार्केट में एक खुद की मोमेंट होती है, नाउ मोमेंट होती है। तो फोकस ऑन ट्रेडिंग ऑन द नाउ मोमेंट रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि कल तुमने इतना प्रॉफिट किया या उतना लॉस किया। ओके, तो उससे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो या फिर उससे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस मत हो। जस्ट थिंक विथ लाइक एक काम माइंड से सोचो। ओके। उसके बाद हमारा सेवन्थ रूल है कि किसी दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करेगी, किसी दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो जिस दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है उस दिन तुम्हें इतना प्रॉफिट करना है कि जिस दिन तुम लॉस करो उस दिन के लॉस वो तुम्हारे प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाए और तुम ओवरऑल प्रॉफिट में हो जाओ। ओके। उसके बाद हमारा लास्ट जो रूल है मैंने रिसेंटली ऐड किया है वो है एडिंग टू अ विनिंग पोजीशन, जो कि मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम एडिंग टू अ विनिंग पोजीशन। अगर मेरी ट्रेड एक प्रॉफिट में जाती है तो आई ट्राई टू एड टू दैट पोजीशन ताकि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। ओके। उसके बाद अगेन ये मेरा साइजिंग नोट कार्ड है। मेरी डेली की रिस्क लिमिट है इस समय 2%, एंड अगर मेरा एक A+ सेटअप मुझे दिखता है तो आई एम गोइंग टू रिस्किंग अबाउट 1.50% ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। एंड अगर मुझे एक A सेटअप दिखता है जो कि हमारे डे टू डे रेगुलर वाले सेटअप्स होते हैं उसमें आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग अबाउट 1% पर ट्रेड। ये 1% हम 0.5% से बढ़ाते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीक हमने 0.75% रिस्क किया था एंड इस वीक हम 1% रिस्क कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू बी risking 1.25% on that particular trade. Okay, so that is it for our rules today. That is it our ये था हमारा साइजिंग नोट कार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे। लेट्स जस्ट किल द मार्केट। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी इन द चैट सेक्शन और यू कैन आस्क मी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। एंड उसके अलावा प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द स्ट्रीम इफ़ यू आर वॉचिंग राइट नाउ, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर डेली कंटेंट। तो yeah, thank you everyone for showing up and please consider liking the stream. So if you have any question chat just feel free to ask me in the chat section, या फिर अगर तुम्हें कोई चार्ट्स भेजना है या तुम्हारा कोई ओपिनियन है आज के मार्केट के बारे में तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद मी। ओके। एंड अगर तुम किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो तो लेट मी नो। जिस तरह से मैं अभी रिसेंटली स्ट्रगल कर रहा हूँ जब भी मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ अपनी ट्रेड में, आई एम हैविंग हार्ड टाइम होल्डिंग दैट ट्रेड टिल प्रॉफिट। So that is my struggling, that is what I'm struggling with right now. So let's just see and how we can overcome that. So yeah, that is it for our top down analysis, our trade write up and our rules. Now let's just get started and see what market has to offer us today. All right, so how's everyone who is watching right now and जो भी देख रहा है press W in the chat so I can see कि कौन live है and कौन नहीं, and we'll start some kind of talk depends upon that. Okay, तो Faisal is here. WW, who else is watching right now? Sometimes क्या होता है पता है, sometimes we push to 10 people, sometimes just around 10 लोग हमें देख रहे होते हैं एंड कोई भी लाइक चैट में कुछ टाइप नहीं कर रहा। बट अगेन अपना अपना प्रेफरेंस, तो लेट्स जस्ट सी। ओके, अंश इज ऑल्सो हेयर। हु एल्स इज हेयर? हु इज द थर्ड पर्सन हु इज वॉचिंग राइट नाउ?
एंड प्लीज़ कंसिडर ड्रिंकिंग वाटर गाइस, वाटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड वाटर पीने से तुम्हारी डेफिनेटली ट्रेडिंग बढ़ जाएगी. All right, just give me a second, let me turn on the fan because बहुत गर्मी लग रही है. Okay, Faisal, just give me a minute, I'll answer this. I think TP according to the plan, जो मेरा प्लान होता है, तो for TP I shall wait until like significant level approaches. बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मार्केट जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मूव हो रहा है ना, आई एम हैविंग दिस एंग्जाइटी कि मैं कितना जल्दी टारगेट लूँ, एंड जल्द से जल्द प्रॉफिट लेने का ट्राई कर रहा हूँ. एंड आई ऑफ कोर्स ये एक बैड प्रैक्टिस है, एंड बैड प्रैक्टिस के लिए अगर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता. तो ideally I should wait for the levels, but I'm taking profit on like 1:1 or 1:1.5 level these days, but I'll definitely improve them over the time, so stay tuned. What about you? How do you approach your TP? Do you wait for your TP to happen, or like do you take profit based upon your RR levels? ओके, तो राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बजने वाला है, एंड विल बी स्ट्रीमिंग टिल 2 o'clock. तो तब तक कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरीज है, तो फील फ्री टू आस्क लो. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अभी इस करंट पॉइंट पे तुम किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो सबसे ज़्यादा. दैट्स अ गुड पॉइंट फैजल कि तुम 1:1 में मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ले रहे हो. दैट्स अ गुड थिंग. And again, I'll say, consider adding to your winning position, and you will see yourself winning even big. या डूड, इमोशंस तो मुझे भी काफ़ी परेशान करे. इवन प्रो लेवल्स को भी ना इस लेवल पे भी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. अभी रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट दिस गाय टॉम हॉवर्ड, जो बेस्ट लूजर विंस का ऑथर है. तो उसमें इवन ही स्ट्रगल्स, इवन नाउ ही स्ट्रगल्स विद इमोशंस. समटाइम्स ही टुक प्रॉफिट टू सून, समटाइम ही लेट लॉस रन. तो आई थिंक दिस इज़ अ नेवर एंडिंग बैटल. रादर देन फाइटिंग इट, वी शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है, मैं करंटली मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ, करंटली मुझे ये करना चाहिए, एंड say that to yourself frequently. I think that can be a good thing to like build discipline. But again, अगर तुम वो एक्सरसाइज करोगे ना, विच आई वॉज रिकमेंडिंग यू yesterday, कि सबसे पहले एक सिंपल मैकेनिकल सिस्टम बिल्ड करो जो तुम्हें SL दे, TP दे, एंट्री पॉइंट दे, एंड तुम्हें पोजीशन साइज दे तुम्हारा, ठीक है. एंड ये इससे तुम 30 ट्रेड्स के लिए फॉलो करो मैकेनिकल सिस्टम अपना, एंड यू विल सी कि 14th एंड 15th ट्रेड में जो तुम्हारा डिसिप्लिन है वो अपने आप पे बिल्ड होने लगेगा, ठीक है. एंड अगेन रोज़ अपना रिव्यू सेशन करो जिस तरह से मैं करता हूँ. लेट मी जस्ट शो यू. जो तुम्हारा डेली रिपोर्ट कार्ड है वो बनाओ. दिस इज़ माइन राइट हियर, इफ़ यू सी डेली रिपोर्ट कार्ड. आजकल एवरनोट्स इतने ज़्यादा एड्स देने लगा है ना, इट्स जस्ट टू टायरिंग टू यूज़ इट. सो यू कैन क्रिएट योर सेल्फ डेली रिपोर्ट कार्ड. तुमने क्या गलतियाँ की है वो लिख सकते हो, जैसे कि ये मेरी कल वाली ट्रेड थी, एंड यहाँ पर मैंने लिखा है कि वाई आई टुक दिस प्रॉफिट टू सून, बिकॉज मैंने प्रॉफिट है बहुत जल्दी बुक कर लिया था.
ठीक है, इवन दो इट वाज लाइक माई ए प्लस एंट्री एंड मैंने लगभग मैं 3% से इंगेज था इस ट्रेड में, तो अगर टीपी के लिए मैं वेट करता तो आई वुड हैव मेड अराउंड 4 to 6% समवेयर, ओके, बट आई गॉट लाइक fearful and I cut this trade too soon. तो ये मुझे जब मैं ट्रेड को कट कर रहा था तब रियलाइज़ नहीं हुआ, जब मैं वापस ट्रेड को आई वॉज लाइक डूइंग द डेली रिपोर्ट कार्ड सेशन, तब मुझे क्लियर हुआ कि ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि ठीक है, आई वॉज स्केर्ड ऑफ लूजिंग द प्रॉफिट आई मेड, बिकॉज कुछ दिन पहले मेरी एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हुआ था, जिसके कारण मैं करंट ट्रेड में फेयरफुल था कि जो प्रॉफिट मैंने बनाया है वो कहीं चले ना जाए, इसलिए मैंने ट्रेड को जल्दी काटा। उसके बाद अगेन मुझे लाइक आई एम हैविंग हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग द रिस्क आई एम पुटिंग इन अ ट्रेड, मतलब जो भी रिस्क मैं ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर ट्रेड में, कहीं ना कहीं वो मुझे बॉदर कर रहा है, बिकॉज आई एम यूज टू ट्रेड विद 0.5%, मतलब मैं 0.5% से आइडियली काफ़ी अच्छा काम करता हूँ, बट ईच टाइम आई स्टार्ट टू रिस्क मोर, लाइक मैं 1% या उसके बियॉन्ड जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी मुझे इफ़ेक्ट करने लगती है। तो दैट्स द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ। एंड बट इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आई हैव टू कीप लाइक कीप बीटिंग माई सेल्फ, कीप बीटिंग माई सेल्फ, कीप बीटिंग माई सेल्फ, सो जो साइज़ में ट्रेड कर रहा हूँ उसकी मुझे आदत हो जाए। सो दैट्स वाई रादर देन रिड्यूसिंग द साइज आई एम कीपिंग इट द सेम एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट। तो मेंटेन योर डेली रिपोर्ट कार्ड एवरी डे, ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि ये मेरा फैब का है, तो फैब डेली रिपोर्ट कार्ड, देयर यू गो। या आई एग्री विथ यू, बट अगर तुम्हें एक मैकेनिकल सिस्टम मिल रहा है जिससे तुम मैं लाइक यहाँ उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ फैजल, में आई एम फोकसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन, क्योंकि कई बार तुमने देखा होगा कि समटाइम्स यू जस्ट टेक स्टॉप लॉस टू सून या फिर डर जाता है, स्पेशली जब साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मैं ये एक्सरसाइज के अक्रॉस आया था कि 30 एक मैकेनिकल सिस्टम बिल्ड करो एंड उसके अक्रॉस 30 ट्रेड्स लो, एंड इवेंचुअली ऑन 15th ट्रेड तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी हद तक बिल्ड हो जाएगा। तो दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं अपनी ही पेयर्स में ट्रेड करता हूँ ब्रदर, आई ओनली ट्रेड यूरो यूएसडी एंड गोल्ड। So of course, and the only reason I didn't took EURUSD trade yesterday because I was fearful, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूव हो चुका था, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक फियर वाला इमोशन आ गया था। दैट्स वाई आई थॉट कि ठीक है मैं यूरो को स्किप करता हूँ आज के लिए एंड लेट्स ट्रेड गोल्ड, एंड दैट्स वाई आई ट्रेडेड गोल्ड yesterday. Okay, so we are going to be streaming till 2 o'clock today. Right now the time is almost 1 and we are seeing like a really bearish candle, but अभी I'm not going to be entering this impulsively. First of all, अगर 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो of course this is our trigger point right here. If price start to go above below this level, will मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा, तो ये ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट, बट वंस वी विल हिट द पर्टिकुलर सेशन। अभी भी समय काफ़ी बाकी है लंदन सेशन शुरू होने के लिए। एंड अगेन इफ़ यू हैव टू चेक टाइम कि अभी कौन सा सेशन चालू है, ऑल यू हैव टू डू इज़ गो एट forexfactory.com एंड forexfactory.com के तुम होम में जाओगे तो विल सी राइट हेयर, यू विल सी कि लंदन सेशन शुरू होने में लगभग 34 मिनट्स बाकी है, विच इज़ अबाउट 1:30 इन आर लोकल टाइम। ठीक है, तो लेट्स लुक एट गोल्ड। Yes, Akash. If you think कि market is going to be on sell, stick with your analysis because वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि जो तुमने एनालिसिस किया है, just stay with that. Of course, you can learn a lot of stuff from a lot of people, but always stick
with your own analysis. Okay, well yeah, gold can be a fake out, but अभी तो मैं बिल्कुल सेल नहीं लूँगा अनलेस आई सी अ फ्रेश सपोर्ट ब्रेक्स एंड टेस्ट, बिकॉज अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो मार्केट इज़ टोटली बुलिश। तो यू कांट रियली से कि लाइक इट कैन गो फॉर सेल, मतलब जितना अवेलेबल डाटा अभी है उस हिसाब से आई वोंट बी टेकिंग सेल पोजिशन ऑन गोल्ड। कोई बात नहीं, डोंट बीट योर सेल्फ, लाइक खुद पर गुस्सा मत करो, फॉरगिव योर सेल्फ एंड लुक फॉर नेक्स्ट स्कैल्प। ऑफ कोर्स यू कैन ईजिली डू दैट मच, राइट? Okay, so there you go. Euro USD. I think I will enter this trade right here if I see break of this level. So all we have to do is wait. क्या I agree कि यहाँ पर एक support भी है, तो but I think because दिल्ली का भी pressure है and 4 hour is also bearish on this previous candle, तो we can totally break this level. Ideally I should just wait for next session to open. So let's just see. And yeah, I'm having one more problem कि I'm having FOMO. Like एक ट्रेड अगर जब जाती रहती है ना, लाइक पॉजिटिव चल रही है, तो मैं काफ़ी जल्दी एंटर कर ले रहा हूँ उस ट्रेड को. दिस इज़ द सेकेंड थिंग आई एम स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ. द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक टेकिंग प्रॉफिट्स टू सून. These are the two things I'm struggling with right now. See, तुम्हें अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आ गया है ना कि लाइक व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विद, कहाँ पर तुम गलती कर रहे हो, कहाँ पर तुम ठीक कर सकते हो, तो जो हमारा माइंड है, जो ह्यूमन का माइंड होता है, वो बेसिकली अ पावर हंग्री मशीन, जिसको लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है हमारे ब्रेन को. ठीक है, जो नेचुरली जिस तरह से हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, उस ब्रेन के हिसाब से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. ठीक है, तो वंस अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके थ्रू देखो कि तुम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड योर सेल्फ कि ठीक है यार, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी छोटी है एंड आई कैन टोटली फिक्स इट. ऑलराइट, तो आवर ब्रेन इज़ लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन. अगर तुमने वो बुक रीड की है, लेट मी टेल यू व्हाट वाज दैट बुक. द बुक इज साइको साइबरनेटिक्स. दिस बुक राइट हियर, मैक्सवेल माल्स, डॉक्टर मैक्सवेल माल्स की ये बुक है. इफ़ यू हैव रेड दिस बुक राइट हियर, this book right here, this is a really good book. तो बेसिकली अगर तुमने वो बुक पढ़ी है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसका ये सेकंड पार्ट है, ऐसा पकड़ के चलो. ऑफिशियली नहीं है, बट व्हेन आई रेड दोज टू बुक्स टुगेदर, आई थिंक दैट रियली वर्क फॉर मी. तो इस बुक में बेसिकली ये बुक का कंसेप्ट क्या है कि जो मैक्सवेल माल्स है, जो डॉक्टर है, वो एमडी है. लाइक इसका जो स्क्रीन बोला, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, लाइक नॉट लाइक मतलब वो जो प्लास्टिक सर्जरी करता है ना, वो डॉक्टर होता है. एंड वो लाइक ये एनालिसिस करता है अपने पेशेंट्स के ऊपर कि किस तरह से जब उनका माइंड किसी चीज़ की तरफ जाता है, जिस चीज़ में फोकस करता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ उसी डिग्री में शेप होने लगती है. ठीक है, सो दिस इज़ वन मोर बुक इफ़ यू गाइज वांट टू रीड. दिस इज़ अ रियली गुड बुक. एंड या अगर तुम ये बुक को कंबाइन कर रहे हो ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो दिस बुक राइट है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू बिल्ड योर थिंकिंग बेसिकली. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एज अ ट्रेडर तुम अपने वोल्ट में एक बुक और ऐड कर सकते हो, विच इज़ Atomic Habits. I'm not sure if you have read that book, but काफ़ी पॉपुलर बुक है. 2 साल पहले वो बुक काफ़ी वायरल हुई थी, इफ़ यू आर इनटू रीडिंग कम्युनिटी. तो अभी तो मेरे पास है नहीं वो बुक,
बट या दैट बुक इज़ रियली गुड टू. तो एज अ ट्रेडर आई थिंक तुम 3 बुक रीड कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इन द जोन, सेकंड वन इज़ बेस्ट लूजर विंस, एंड थर्ड वन इज़ एटॉमिक हैबिट. अगर तुम ये 3 बुक को रीड कर लेते हो तो यू विल develop how to think about the market, how to build the discipline, and how to think like a professional trader. Okay, तो seems like gold bullish है particular candle में. It will be interesting to see. अभी रिसेंटली ना लाइक कभी कभी मैं थोड़ी बहुत कोचिंग करता हूँ. तो रिसेंटली मेरे पास एक अकाउंट आया था. उसमें द गाय इज़ ट्रेडिंग GBP JPY. ओके, लेट मी टेल यू दैट स्टोरी. अभी रिसेंट की बात है. मेरे पास वो अकाउंट अभी भी है. अराउंड $10,000 का अकाउंट है. आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑन दैट अकाउंट ऑफ कोर्स बिकॉज उसकी जो बंदा है उसकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेड को माइनस में काटना ही नहीं चाहता. ठीक है, वो ट्रेड को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता. आई रिकमेंडेड हिम कि भाई अपनी ट्रेड को काट ले. ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट में है, काट ले. एंड राइट नाउ दैट ट्रेड इज़ रनिंग एट अराउंड माइनस $1,800. थिंक अबाउट इट. एंड द थिंग इज़ कि ही लाइक रिफ्यूजेस टू टेक स्टॉप लॉस. लाइक स्टॉप लॉस को रखते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जो अपनी लूजिंग पोजीशन है उसमें ही ऐड करते जा रहे हैं. तो दैट्स द मिस्टेक मैनी पीपल्स डू. एंड yeah, let's just see कि how that account is going to turn out. जिस दिन तुमने अपना लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया ना कि ठीक है दिस इज़ जिस दिन तुमने लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया उस दिन यू विल इवॉल्व एज लाइक द बेस्ट ट्रेडर. लाइक जो तुम्हारा बेस्ट ट्रेडर का वर्जन है, यू विल बिकम दैट. ओके, तो अगर गोल्ड में एक नज़र मारी जाए तो आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकिंग गोल्ड ट्रेड अंटिल वी हैव लाइक पोस्ट लंडन तक. आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकिंग गोल्ड ट्रेड. बट सो फार जो हमारा डेली का हाई था दैट हैज़ been holding the price down, but right here we have created a resistance like right here. तो immediately मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा. आई नीड वन मोर confirmation, and confirmation will be something like this. If this happens then I'll only be interested in taking gold price, but till then I'll just be patient. ठीक है, तो there you go. We are waiting for London session to open जो कि 1:30 बजे ओपन होगा. एंड अगर तुम बिटकॉइन को भी क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो बिटकॉइन इज़ राइजिंग रियली अग्रेसिवली. बट अगेन वी डोंट ट्रेड बिटकॉइन. बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन यू शुड लुक इनटू दैट चार्ट. बाकी वी हैव बिटकॉइन ETF न्यूज़. तो लेट्स जस्ट सर्च दैट एंड सी. ठीक है, तो रिसेंटली बिटकॉइन का ETF लॉन्च हुआ है. एंड लाइक सेंट्रल बैंक्स वगैरह ने अराउंड 10,000 बिटकॉइन बाय किए रिसेंटली. एंड इवन मोर दे आर गोइंग टू बाय. तो दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ. अगर तुम कॉइन मार्केट कैप में जाओगे एंड यू विल सी कि करंट जो मार्केट वॉल्यूम है, मार्केट कैप है बिटकॉइन का, विच इज़ अबाउट $1.2 ट्रिलियन एंड इट इज़ ऑन द राइज. तो आई थिंक
market can easily go to around 100k easily. Bitcoin can easily hit 100k. And let me know guys if you have ever traded crypto. There you go, gold is having a breakout right now, but of course मैं FOMO नहीं करूँगा इस trade में. I'll be just patiently waiting for signal to be formed. All right, because it can be totally as similar as the yesterday we saw. Yesterday we saw a setup uh, right here, this setup like similar. We created a Asia high right here, uske baad we had a breakout, but the support eventually broke and we fell down. So this kind of setup is totally possible on gold right now. ठीक है, over here on EURUSD we are creating some kind of support. यहाँ पे काफ़ी buying momentum आ रहा है, but let's just wait and see कि what happens. Over here on gold, अगर तुमने buy किया है तो congratulations, and if you are still waiting then also congratulations, because patiently अपने setup का wait करना is an achievement in itself. तो congratulations if you're waiting for your setup. Okay everyone, and drink water, don't forget to drink water. ठीक है, तो अराउंड 20 मिनट्स में हमारा सेशन शुरू होने वाला है, लंदन सेशन. मतलब लंदन सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है. तो I'll be interested if market start to break this level. I think I'll be interested in selling the market if that happens above the target. We can easily target this area right here, this area, which is like 40-50 pips away, I guess, like yeah, 4-5 pips away, and we can easily go to this area right here. So let's just wait and see how the market will behave on the US Open. Sorry, market behave on London Open. I think Faisal, ये तुम्हारा setup है, right? When a fresh resistance breaks, this is your setup, right? Let me know if it is your setup on your playbook. Whenever a fresh resistance break or fresh support break, you take that trade, right? So is this your setup?
या आई एग्री विद इट, बिकॉज किसी भी एक तरीके पे डिपेंड होना इट्स लाइक खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो आई एग्री विथ यू कि तुम बाकी कॉन्फ्रेंसेस भी देखते हो। You guys really impress me as traders, and everybody is improving in our community, and that's what I really like. Of course, everybody is struggling too with their own emotional baggage, but everybody is improving too, and that's what I like about you guys. So keep grinding and keep doing your best. एंड इफ़ पॉसिबल अपनी अपनी जर्नी को यूट्यूब में डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करना शुरू करो। इट्स रियली फन एंड या इट्स रियली फन। ओके, तो अंश ने हमें चार्ट भेजा है, लेट्स लुक इनटू इट। ओके, अंश ने चार्ट भेजा है, लेट्स जस्ट लुक इनटू इट। देखो, okay, so seems like a really good trade based upon two reasons. First of all, we closed above a range high, okay, and उसके बाद we had a clean structure to the left hand side. So this was a W trade, and congratulations. And again, let me know if you were able to hold this trade till your particular TP, या फिर तुमने जल्दी अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया, या फिर तुम्हारी ट्रेड अभी भी रनिंग है। लेट मी नो। बाकी यू आर टारगेटिंग गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यू आर इम्प्रूविंग, तो कीप इट अप, ओके। या ओके, इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू होल्ड दिस, मेक श्योर कि तुम अपने इमोशन को इन चेक रख रहे हो, ज़बरदस्ती की होप नहीं कर रहे हो, एंड फियर में आके ट्रेड कट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी लेट्स सी हाउ दिस वन गोइंग टू प्ले आउट, बट दिस वाज अ रियली गुड ट्रेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Okay, over here on EURUSD, seems like market is just so choppy right now. So I haven't took any trade at the moment. So we'll be just waiting and seeing if we see any particular trade. Okay, I'm interested in taking sells by the way, because I think ये कल वाला सारा move it seems like it's a fake out to me, but it will be interesting to see. एंड अगेन आज शाम की न्यूज़ है, तो मेक श्योर कि तुम डिसिप्लिन से ट्रेड करो, अपने रिस्क को ठीक तरह से मैनेज करो, ओके, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। या दैट्स या आई टोटली अग्री विथ यू, बिकॉज जब तुम अपने रिस्क को प्री डिफाइन करते हो ना, तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अगर एस एल भी हुआ तो क्या हुआ, आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी लूजिंग ओनली दिस अमाउंट। तो दैट्स वाई मैं बार बार कहता हूँ कि अपने रिस्क को प्री डिफाइन करो एंड यू विल इवेंचुअली विन।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन फिगरिंग दिस आउट एंड मेक श्योर कि तुम अपने प्लान से स्टिक रहो ऑल द टाइम ऑल द वे. ओके. या आई एग्री विथ यू. आई डोंट नो कि ऑफ कोर्स वो शायद जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड करते होंगे, बट स्टिल उन्हें समझना चाहिए कि व्हाट रियली ट्रेडर्स आर लुकिंग फॉर rather than लाइक अपने मन की करना, राइट. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट रियली ट्रेडर्स वांट. लाइक फीडबैक लूप को ठीक तरह से यूज़ नहीं करता है. Yeah, I agree with you. In the start, when I started my trading journey, I was struggling with that a lot, dude. I can't like tell you enough how much I was struggling कि अपनी कैंडल के क्लोज होने का वेट करना. इवन मैं वेट ही नहीं कर पाता था, काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था. एंड आई यूज टू टेक लाइक इम्पल्स एंट्रीज. Yes, I had my lunch. Thank you for asking. Okay, so I think I'm going to be entering this trade right here on impulse entry. I'm taking a short position. I'm a bit late on this particular trade, to be honest, but let's just see how this one's going to play out. Let's just risk about 1:1. Okay, and let's just see how this trade is going to play out.
ओके, तो अंश ने हमें चार्ट भेजा है. लेट्स लुक इनटू इट एंड सी व्हाट द चार्ट इज अबाउट. Yeah, I have sold uh, EURUSD to be honest, but let's just see how this one works though. Okay, तो अंश का चार्ट देखते हैं. There you go again, another simple and nice W trade. Market was trending upside. It created a small support, and on the support, he took this trade, and it was a crazy W. So congratulations. Okay, so my trade is in, and how will I manage this trade, you ask? It's simple. If I see a 15-minute candle closing bullish, I'll close half of the trade, and if I see the market is losing its momentum, I'll close like half of the trade. But so far we have entered this trade, so let's just see how this one is going to play out. But about the target, I'm going to be target this, okay? And after closing this candle, I'm going to be moving my stop loss to 15-minute ATR into 1.5, okay? There you go. The market is pretty bullish, sorry, pretty bearish. So let's just see how this one's going to play out. I got a better price actually. जो मुझे प्राइस मिली है for my entry is at 8308. Let me just fix it according to this. 8308, 8308 right here. मुझे यहाँ से entry मिली है. And let's just see how this one's going to play out. I'm going to be moving my stop loss based on 15-minute candle later. So let's just see. And again, if you want to see the screenshot of my live trade, I'll post it to our Telegram channel and I'll update the trade there. So far, right now I'm waiting to add to this position because this is a winning position. तो अगर 5 मिनट में I see like a good spot to enter again, I'll enter with the size. Okay, I'll enter with more size if we see a closure below this level right here. ठीक है. So let's just see how this one's going to play out. We have 3 minutes in closure. So let's just wait and see how this one's going to play out. Shar minute mein candle is going to close. So let's just wait and see. Okay, so we have 3 minutes in this candle closure. Let's just see how this one's going to close.
Yeah, of course, man. Uh, but I think I have accepted it, so I'm becoming good at accepting my risk. So not really, but let's just wait and see how this one's going to play out. I think ना स्ट्रीम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये हो रहा है कि आई एम अकाउंटेबल, यू नो, आई एम लाइक अकाउंटेबल टू यू गाइस। ईच ट्रेड आई टुक लाइव। तो कहीं ना कहीं you guys are like you guys are like forcing me to build discipline indirectly, to be honest, and I'm really grateful for this medium, for YouTube, which like helping me or helping everyone build their discipline. Okay, so we are switched on the candles and we have opened really bullish. So let's just wait and see how this one is going to play out. Okay, I'm looking for like places where I can increase my size on this trade. Okay, so I need two consecutive candles closing bearish so I can enter more position. But so far it is moving against us, so let's just wait and see if this trade is going to get us killed or it will reward us. Okay, my stop loss is at 1.0846. So if I get out, I'll be losing about 1% of my trading account. Let me just post the screenshot in our group. Okay, so I have posted the screenshot to our group, so you can check out my entry right here. Okay, this one is flipped like really aggressively. So let's just wait and see how this one is going to play out. And if my stop loss triggers, I'll be done for the session and I'll look again at US session for better entry. Okay, so I think I am stopped out, guys. Yeah, I am stopped out at this price right here, at this price right here. So yeah, this abhi, oh shit, there was news at 1:30, right? But yeah, right now I'll wait for a candle to close, and if I see bullish momentum, I'll look for buys. But I have been stopped out of the trade at the moment, so that was pretty sad. Yeah, man, totally a crazy spike. I think this was a significant level based on 4-hour chart. So maybe I would have waited for that
for price to close up below this level, but I think that was fine. I took the trade based upon the analysis I had taken, so things happens. So what I'm going to do right now, I'm going to copy this image and do my DMR session, but for 1 hour there will be no trades. Yes brother, मुझे ना चैट्स नहीं दिख रहा है, just give me a minute. All right, impulse entry based upon break of this low right here, and yeah, I was targeting 1:1. There was news, there was a yellow touch right there. तो okay, so euro's been rising and gold has been falling. Let me just post this screenshot in our group. Okay, so I have been stopped out of the trade. We are doing our, yeah, it can be news, but I think blaming on the news doesn't make sense. Of course the moment is caused by news, but let's just wait and see how this one's going to play out in about 1 hour. Because the thing is, first of all, there was two scenarios. We created the support right here and we took that based upon this previous candle break, but there was the support formed right here. And abhi, at the current point, the best thing to do right now is wait for a candle to close, and if we see some kind of resistance breaks, then I'll flip my position towards buy. But right now I'm not going to be buying this trade immediately. So yeah, I'm going to be updating my monthly record. There you go. We took another L, so this will be 4 losses and 9 wins so far in this month. I lost about 1% on this trade. Yeah, we lost about 1% on this particular trade. Around 9 pips we lost in this particular trade. Okay guys, there you go. There was news. What mistakes I did psychologically. So psychologically I think I was on point. Okay, I was on point. I took this trade based upon our analysis. Let's look at gold. Just give me a minute.
या अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो या gold can totally flip, but we have a flipping price at around 2035. तो but again I won't be taking gold sells this easily. अगर तुम 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट में देखोगे ना तो we broke above this level right here. तो I'll be waiting for some kind of structure break on 30-minute chart for sells, and I will wait for this area to break on 15 minute to take buys, something similar. So yeah, we are doing our trade write-up, sorry, we are doing our DMR, and there you go. Okay, and I have to write down what I'm feeling right now. I'm feeling guilt because stop got triggered. ठीक है, even though the trade was based on playbook, I'm still feeling guilty. However, this is my consent. Market is neutral. There you go. Okay, so simple trade write-up for today. I'm feeling a bit of guilt right now because this stop loss has happened, but overall I think everything was good in this particular trade. I don't think so I should blame myself. So I should totally feel normal rather than this guilt, but I'm feeling this guilt, yani ki I have a lot to learn about the market and how do I manage my thinking process. So yeah, again I will re-enter into this trade. If this area start to break again, I will give this trade one more chance if I see like a bearish momentum, because there is news today. So again, anything can happen in the market, and I'll keep you guys updated in our Telegram group. If you haven't joined our Telegram group yet, मैं उसकी link description पे दे रखी है. You can definitely go ahead and join that group from there. या फिर तो मेरी profile से भी link ले सकते हो if you wanna trade, if you wanna join my Telegram group. ठीक है, तो what I'm going to do right now, I'm going to post this on our Telegram channel, my daily trade write-up, ताकि you can learn something from it as well. That was a relatively quick one actually, because of course there was news that's why there was a lot of volatility. Okay, if any one of you watching right now, let me know, am I like building copium, मैं खुद को खो करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर I'm genuinely thinking right? What do you think, guys? I'm not sure कि ये क्यों कॉपी नहीं हो रहा है. Let me try this way. Copy image. Yeah, I agree with you. So I'm not coping with myself, right? Because if I'm coping with myself, that's a wrong thing. Because कई बार क्या होता है, you cannot see yourself कि तुम actually किस तरह से behavior कर रहे हो, है ना? So that's why I'm asking you guys. This is my daily report card. DRC.
29. Okay, we are going to be live till 2:30. So sorry, we will be live till 2. So if you have any questions or anything, please feel free to ask, and I'll post the updates on my Telegram group. Yeah, I agree with you. But I think Ansh, you already have a winning trade, so don't force yourself to take this flip trade, okay? Or you can just easily get screwed, because don't forget कि शाम के समय news भी है, right? Okay, so 15-minute candle has been closed and it is closing bullish, like really, really bullish. I think I'll just skip this session and look at the evening right now. It doesn't make sense to take any more trades. Yeah, so you can just skip the day, bro. I mean, skip the session, not the day. Because अगर तुम्हें दिखती है trade according to your analysis, you should definitely take this trade. Okay, so let me know what I'm thinking right now, because my trade has just been triggered my SL. I'm having like slight urges to flip this trade and take a buy, but I am not going to do that. Rather that I'll just wait for next session. That will be smarter move, because 90% of the traders will thinking this will flip this trade based upon emotions, but I won't be doing that right now. I'll be just wait for my next setup to occur. All right. Okay, we are going to be streaming for 10 more minutes. Yeah, man, of course. We are we only humans after all.
All right, Ansh. See you in the evening or tomorrow. Do your best for the day, okay? And don't enter the trade impulsively. Take a smart decision based upon your analysis, okay?
Okay, so we are going to be closing the stream in about 5 minutes. So if you have anything to say, anything to ask, you can ask me till then, and then we'll close out the stream and call it a day, and we'll trade in the evening if we see any good setups right here. But if you are interested in trading this setup right here on gold, if I see break of this level, you can enter this trade. I won't personally because I just took an L. All right. And of course there is news at the evening too, so I'm going to be skipping the gold right here. I'll be focusing my eyes on EURUSD. There you go. And again everyone, if you are watching right now, please consider liking this channel, please consider subscribing to my channel. And yeah, our goal is basically to reach as many people as possible and aware them about trading psychology. Or but basically in our channel we talk about the things where 90% of the channel don't. We don't focus on the analysis part, focus on the psychology part. Just like here, we lost a trade and I'm feeling a lot of guilt and a lot of bad emotion, even though I should not, uh, because I just have to follow the probabilities to win in the long term. All right, so that is our plan. Okay, so 5 more minutes, and after that we will be closing our stream for today.
Okay, guys, we are going to be closing the stream soon. If you have any question, feel free to ask me and I shall try to answer them. We are going to be closing the stream in about 5-10 minutes. Okay, I'm just doing my session. Yes, man. We got, hey man, what's up, dude? What you doing? 350 subs हो गए हैं हमारे, तो thank you each and everyone for supporting me. And how you doing, Aman? It's going good. We are just getting bored actually. We lost a trade today. So I'm doing my DRC session. Matlab, I'm reviewing what I could have done right, basically. What's up with you? Where are you? What you doing? Okay, I'm going to be closing the stream. Just execution जो हमने ट्रेड की थी उसका जो execution है, that was really well. Okay, so we got a question. Thanks, man.
Please consider liking the stream, everyone, and please consider subscribing to this channel. We are close to 500 subs, so yeah. Okay, though I'm going to be closing off the stream, guys, and thank you everyone for showing up.